Good afternoon, all of you. My name is Arvind Gautam. I am working as assistant professor in Ajay Kumar Garg Engineering College. Okay, so now we are here for discussing about the subject of database management system. Previously, we have discussed serializability, what is serializability schedule, and what is conflict serializable schedule. We have discussed what is schedule and acid properties, atomicity, consistency, isolation, and durability. And there is two types of serializability in DBMS. One is conflict serializability and view serializability. So we have discussed what is conflict serializability, and I have seen the precedence graph. I have taken an example, and we have seen that the transaction is in conflict serializable or not. Okay, through the precedence graph. Okay, and we have also discussed what is edges and what is the conflict pair. This is the conflict pairs. Through this we have created a precedence graph. So our next topic is view serializability. Okay, view serializability. So we will see view serializability through an example. So let's take, I am taking I am taking a schedule. There 3 transactions are there, T1, T2 and T3. Okay, and according to this transaction, there are some their processes are here. Transaction T1 is doing the read operation on resource A. We have discussed all the what is the transaction, what is the process, what is the schedule, and what is the resources. Okay, so here a schedule transaction T1 comes in the schedule and doing the operation on resource A. What is the operation? Read operation. Okay, and second is transaction T2 commit schedule and doing write operation on the same resources. After that, again transaction T1 come in the schedule and doing write operation on the same resource. After that, transaction T3 comes in the schedule and doing write operation on the same resources. Okay, this is the it's only an example. Okay, so here a question, we have to find the conflict, this schedule is conflict or not. I am taking an example, a schedule. This is the these are the transaction and their operations. So our question is we have to find this transaction is conflict or not. So in earlier example we have seen that through precedence graph. In precedence graph, if there is any loop, so we can say that if there is any loop, so we can't say that this schedule is serializable or not. If there is no any loop, so we can say that this schedule is serializable. Okay, so we will check first transaction T1, transaction T2 and transaction say T3. Here we have seen that transaction T1 and we will also see that what is the conflict pairs. What is the conflict pairs? Read, write
read with write, and write with read, and write write. These are the conflict pairs. Okay, so transaction T1 is doing read operation. What is the read operation? What is the conflict pair of read operation? Read का write के साथ. Okay, so here we are saying that read operation, transaction T1 is doing read operation, and what is the conflict pair? We will see that transaction T2 there is a write operation. So this is the conflict pairs. T1 goes to T2. We will draw the edge between the transaction T1 and T2. We have discussed in the conflict serializability in previous video lecture. Okay, after that here we are saying that transaction T1 that is doing read operation is also a conflict pair with the transaction T3. T1 goes to T2 and T1 also goes to T3. Okay, after that transaction T2 comes in the schedule and doing write operation. What is the write conflict pairs of write operation? Write का read के साथ और write का write operation के साथ. So here we are saying that write transaction T2 is conflict pairs with transaction T1 के write operation के साथ. तो T2 goes to again T1. So here we are here we can see that there is a loop. Okay, there is a loop. If there is a loop, so we can't say that this schedule is serializable, or we can say that graph, precedence graph, if loop found, then it is non-conflict serializable. It is a non-conflict serializable. Okay, if it is a non-conflict serializable, so we can't say that it is a serializable. Okay, it is a serializable or not. Okay, so through view serializability we will see that this non-conflict serializable schedule is serializable or not. Okay, means precedence graph से we can see that here कि यहाँ पे हम लोग लूप आ गया. अगर लूप आ गया सो ये हो गया नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया. तो ये अकेले ये नहीं बोल सकता कि कॉन्फ्लिक्ट, नॉन कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है सीरियलाइजेबल नहीं होगा. तो ये अकेले ये नहीं कह सकता कि सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अकेले नहीं बोल सकता कि सीरियलाइजेबल है या नहीं है. सो वी विल चेक थ्रू द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. सो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी विल ऑल्सो अगेन चेक दैट this non-conflict serializable schedule is serializable or not. Okay, so let's here I am taking again another example. Okay, हम इसे शेड्यूल का एक दूसरा शेड्यूल थोड़ा चेंज कर देंगे हम ऑपरेशंस को. So let's here I am taking same example and I am changing their operations. Okay, read operation, write operation, then read, and then again write operation. Okay, here I am just interchange the position. Okay, transaction T1 हम देख के बता सकते हैं शेड्यूल क्या है. नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, बट वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट दिस शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल. हाउ? फर्स्ट ट्रांजेक्शन T1 comes in the schedule and done their transaction. After that transaction T2 comes in the schedule and done their transaction. After that T3 comes in the schedule and done their transaction. So we can see that this is a serializable schedule. अब देख के ही बता सकता है कि सीरियल है कि नहीं सीरियल है. ओके, लेट्स ओके, सो थ्रू व्यू सीरियलाइजेबिलिटी वी विल चेक दिस इज सीरियलाइजेबल और नॉट. ओके, फर्स्ट हेयर आई एम टेकिंग यहाँ पे ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे जस्ट सपोज ए की वैल्यू यहाँ पे जो रिसोर्स ए, जो रीड ऑपरेशन करा रिसोर्स ए पे वैल्यू है उसकी 100.
आफ्टर द ट्रांजेक्शन T2 शेड्यूल के अंदर आता है और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ब्लाइंड राइट हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर ब्लाइंड राइट कर रहा तो ए, जस्ट सपोज ने ए की वैल्यू में 40 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 60। आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन T1 ने भी कुछ ब्लाइंड ऑपरेशन किया, राइट ऑपरेशन किया, जस्ट सपोज उसने भी a माइनस 40 कर दिया a की वैल्यू में। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 40 दैट इज 20। अगेन ट्रांजेक्शन T3 सेम ऑपरेशन, will doing same operation on the same resources, that is a माइनस, अब ये कर रहा है a माइनस 20 ब्लाइंड राइट। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है 20 माइनस 20, अब वैल्यू हमारी हो गई 0। ओके, जस्ट फॉर द सेम शेड्यूल, फॉर द सेम ट्रांजेक्शन वी आर टेकिंग a की वैल्यू को हमने यहाँ पे भी 100 लिया। ओके ओके, अब एंड वी आर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस ऑपरेशन। यहां से मैंने यहाँ पर उड़ा दिया, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे ब्लाइंड राइट कर रहा था जो a माइनस 40 कर रहा था। सेम यहाँ पे भी हम वही कर लेंगे, a माइनस 40 इन द सेम रिसोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अगेन 60 हो जाएगी। अगेन यहाँ पे राइट ऑपरेशन ने a माइनस 40 किया था, यहाँ पे भी हम लोग वही कर लेंगे a माइनस 40। तो हमें अगेन वैल्यू हमें क्या मिलेगी 60 माइनस 40 दैट इज 20। ओके, a की वैल्यू हमें यहाँ, देन अगेन T3 कम्स इन दी शेड्यूल एंड डूइंग राइट ऑपरेशन एंड इट इज डूइंग ब्लाइंड राइट ऑपरेशन। ओके, क्या कर रहा है यहाँ पे a की वैल्यू को 20 लेस कर रहा है। तो सेम हम यहाँ पे भी a की वैल्यू को a माइनस 20 लेस करेंगे, तो हमें वैल्यू कितने मिलेगी 0। ओके, यहाँ पे वैल्यू हमें कितने मिलेगी 0। सो वी कैन हियर वी आर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू, ट्रांजेक्शन जो मैंने यहाँ पे चेंज किया, इंटरचेंज किया रिसोर्स को, दोनों के ऑपरेशंस को चेंज किया, बट दोनों के शेड्यूल दोनों के सेम है, बस जस्ट मैंने ऑपरेशंस को चेंज किया। तो ऑपरेशन चेंज करने के बाद वी कैन सी दैट द रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट इज सेम, द ओवरऑल रिजल्ट इज सेम। सो वी कैन सी दैट we can say that both are not equal, but both are equivalent. Okay, both are not equal. We can say that both are not equal. Yeah, because it is a not serializable schedule, it is a serial schedule. So both are not equal, but both are equivalent. Both are equivalent through this result. We can say that if we interchange the operation on the transaction T1. Okay, so both are equivalent. So it is a conflict equivalent or it is a view equivalent. So we can say that it is not a conflict equivalent, it is a view equivalent. Okay, it is not a conflict equivalent, we can say that it is a view equivalent. Okay. Okay, so we will see this schedule. We can draw the precedence graph. Okay, here we can see that transaction T1 read operation. First it is doing read operation, और read का conflict pair क्या होता है write. So transaction T1 goes to T2. ओके, सेम ट्रांजेक्शन T1 रीड ऑपरेशन का कॉन्फ्लिक्ट राइट ऑपरेशन T3 के साथ भी हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे एजेस, T1 गोज टू T3. ओके, T1 गोज टू T3. ओके, सो हियर वी कैन से दैट देयर इज अ नो एनी लूप. There is no any loop. Okay, if there is a no any loop,
So we can say that there is a no cycle. So this schedule is a conflict serializable. If it is a conflict serializable, we can 100% say that it is a serial schedule. If it is a serial schedule, then we can say that it is a consistent schedule. It is a consistent. Okay, this is the serializability DBMS. First is conflict serializability and second is view serializability. Okay, and our next topic is deadlock. Okay, what is deadlock? We can say that in a database management system, a deadlock occurs when two or more transactions are waiting for each other to release resources such as logs on database objects that they need to complete their operations. As a result, none of the transactions can proceed, leading to a situation where they are stuck or deadlocked. So I am taking an example to see what is deadlock. Here, so the definition, we can say that in a database management system, a deadlock occurs when two or more transactions are waiting for each other to release resources such as logs on database objects that they need to complete their operations. Means here two transactions are there, transaction T1 and T2. T1 acquiring a log on the resource A and transaction T2 acquiring a log on B. ओके, दोनों ने रिसोर्सेस पे लॉक लगा के रखा हुआ है. अब ट्रांजेक्शन T1 वेट कर रहा है T2 के लिए कि वो अपने लॉक को रिलीज करे, देन मेरे को वो मिले उस रिसोर्स पे ऑपरेशन करने के लिए. सेम ट्रांजेक्शन T2 वेट कर रहा है T2 के लिए, T2 वेट कर रहा है T1 के लिए कि वो लॉक को रिलीज करे, मुझे ट्रांजेक्शन ऑपरेशन वो रिसोर्स को ऑपरेशन करने के लिए रिलीज करेगा तब मुझे मिलेगा. सो हेयर वी कैन सी दैट इन अ सिस्टम दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं. ट्रांजेक्शन T1 वेट कर रहा है T2 बी की रिसोर्स के लिए, T2 वेट कर रहा है ट्रांजेक्शन T1 के ए के लिए. ओके, T1 वेट कर रहा है T2 के लिए और T2 वेट कर रहा है T1 के लिए. ओके, सो थ्रू द लूप और इन सिंपली वी कैन से दैट ये वेटिंग कभी खत्म ही नहीं होने वाला, इनफाइनाइट तक जाने वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि वो जब रिलीज करेगा तो मुझे वो रिसोर्स मिलेगा ऑपरेशन करने के लिए. T2 वेट कर रहा है T1 का, T2 T1 का वेट है, T1 T2 का वेट कर रहा है. सो इस सिस्टम में दोनों एक दूसरे का वेट करें जो इनफाइनाइट वेटिंग स्टेट तक जा सकता है. सो if it is occur in any system, so here we can say that it is a deadlock state. Okay, here we can say that a transaction T1 hold a we can say that it is a resource. Okay, and transaction T1 is requesting for the another resource that is acquired by the transaction T2, and T1 acquired the resource student. Okay, a same transaction T2 is requesting to doing operation on the resource that is acquiring by the transaction T1. So in a system they are waiting, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला. That is a deadlock situation. Okay, so here we are talking about the necessary condition for deadlock. What is the necessary conditions for deadlocks? First is mutual exclusion, hold and wait, non-preemption and circular wait. So we will see one by one what is mutual exclusion. First is mutual exclusion. Okay, mutual exclusion say that if there is a transaction, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो शेयरेबल नहीं है, तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमारा क्या होगा कि हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, या एट अ टाइम
एक ट्रांजेक्शन एक रिसोर्स को यूज कर सकता है. ओके, वन बाई वन या एट अ टाइम एक ट्रांजेक्शन एक ही रिसोर्स को यूज कर सकता है. ओके, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपस में ट्रांजेक्शन के बीच में कि बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जो कि अनशेयरेबल मोड में है. अगर शेयरेबल होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी. अगर शेयरेबल है तो ऑब्वियस बात है मैं किसी का वेट ही नहीं करेगा कोई ट्रांजेक्शन, सब एक दूसरे के रिसोर्सेज को लेके और ऑपरेशन को डन कर देंगे. बट यहाँ पे क्या है, अनशेयरेबल मोड में है तो म्यूचुअली एक्सक्लूजन है हर ट्रांजेक्शन के बीच में कि वन बाई वन यूज करेगा और या फिर वंस एट अ टाइम. ओके, एंड सेकंड वन इज अ होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड wait means in hold and wait it is saying that हर ट्रांजेक्शन के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज गिवन है. सो और वो दूसरी ट्रांजेक्शन्स के लिए दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस अभी एग्जांपल में देखा. सो देन हेयर होल्ड एंड वेट क्या कहता है कि जो रिसोर्सेस सेम ट्रांजेक्शन के पास है उसको होल्ड करे और दूसरे के लिए वेट करे. ओके, next one is non-preemption. Non-preemption यानी no preemption means we can't मतलब हम प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, फोर्सफुली किसी भी ट्रांजेक्शन के रिसोर्सेज को छीन नहीं सकते, फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं कर सकते. ओके, दैट इज नॉन प्रिम्प्शन. लास्ट वन इज सर्कुलर वेट. ओके, circular weight. Here we are saying that a transaction T1, transaction T2, and there are three transactions are there. T1 is waiting for T2, T2 is waiting for T3. Okay, so necessary condition deadlock के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रिम्प्शन और सर्कुलर वेट, चारों अगर एक जगह पे होल्ड करेंगे तो वहां पे हमारे डेडलॉक की सिचुएशन आती है. ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है. यस, T1 वेट कर रहा है T2 के लिए, T2 वेट कर रहा है T3 के लिए. ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है यहाँ पे. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि पहले वन बाई वन यूज करेंगे, मतलब पहले ट्रांजेक्शन T1 ने यूज करेगा, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन T2, देन उसके बाद ट्रांजेक्शन T3 वन बाई वन एट अ टाइम. होल्ड एंड वेट, ये ट्रांजेक्शन T1 जो रिसोर्स उसके पास है उस पर होल्ड करे और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करे. ठीक है. थर्ड हमारा नॉन प्रिम्प्शन. यस, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम फोर्सफुली कोई भी रिसोर्स को यहाँ पे छीन नहीं रहा है, प्रिम्प्ट नहीं कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या डेडलॉक है. ओके, यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं क्योंकि ट्रांजेक्शन T3 किसी का भी वेट ही नहीं कर रहा है. तो कभी ना कभी ये अगर स्टारवेशन की भी प्रॉब्लम अगर देखा जाता है तो स्टारवेशन एक इनफाइनाइट तक ना जाके एक फाइनाइट ही तक जाता है और कभी ना कभी उसका टाइम आएगा ही ऑपरेशन करने के लिए. सेम यहाँ पे भी हम हेयर वी कैन सी दैट T3 is not waiting for any other resources. तो कभी ना कभी T3 का ट्रांजेक्शन्स को अपने डन करेगा, तो यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है. बट अगर हम बात करें सर्कुलर वेट की, तो इन सर्कुलर वेट अगर मैंने यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट कर दी, हियर वी आर क्रिएटिंग अ साइकिल. ओके, सर्कुलर वेट. सो सर्कुलर वेट क्या कह रहा है, अब ट्रांजेक्शन T3 वेट कर रहा है अनदर ट्रांजेक्शन T1 के लिए. सो देर यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो रही है. तो ट्रांजेक्शन T2 के लिए वेट कर रहा है, T2 T3 के लिए, T3 अगेन T1 के लिए वेट कर रहा है. जो ये कभी वेटिंग कंडीशन खत्म ही नहीं होने, एक इनफाइनाइट लूप तक ये आपस में एक दूसरे का वेट करेंगे. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेडलॉक की सिचुएशन अकर हो सकती है अगर ये चारों नेसेसरी कंडीशन फुलफिल या अराइज होते हैं किसी भी एक सिस्टम के अंदर. तो वी कैन से दैट there is a deadlock. Okay, next is deadlock handling. How we can handle the deadlock? First is deadlock prevention and second is detection and recovery. Okay, first is deadlock prevention.
And deadlock is very we can say that deadlock is very harmful if we talk about in real time system. Okay, in real time system we can say that it may lead to life and okay, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो, लाइफ इन्वॉल्व हो, तो वहां पे हमारा डेडलॉक जो है काफी हार्मफुल है. ओके, इन रियल टाइम सिस्टम इट मे लीड टू लाइफ एंड मनी. ओके, पहला ये हमारा हार्मफुल है. दूसरा क्या, जहां पे एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन भी हमारा क्या होता है, रिड्यूस यानी मिनिमाइज हो जाता है. ओके, मीन्स अगर हमारा डेडलॉक सिचुएशन में चला गया कोई भी सिस्टम, तो वहां पे रिसोर्स क्या कर रहा है, बहुत देर से वेट कर रहा है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका यूटिलाइजेशन उस पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे हो गया, तो यूटिलाइजेशन रिड्यूस हो रहा है. और पहला क्या था, रियल टाइम, जहाँ पे लाइफ टाइम थ्रेटनिंग की बात आई या फिर जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो, वहां पे ये हमारा डेडलॉक सिचुएशन अराइज अगर होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग और मनी अगर इन्वॉल्व है तो बहुत ही लॉस है, यानी बहुत ही हार्मफुल है डेडलॉक. मीन्स अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एयरपोर्ट का एग्जांपल ले लीजिए. मीन्स अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो सिस्टम है वही डेडलॉक सिचुएशन में आ गया, तो सिग्नल ही नहीं दे पाएगा जो भी अभी प्लेन उतरने के लिए तैयार है. ठीक है, तो उसको सिग्नल ही नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका सिस्टम डेडलॉक है. तो कब तक वो प्लेन जो है वो कब तक एक नॉर्मल सिचुएशन पे रहेगा, वहां पे हो सकता कभी ना कभी उसका फ्यूल खत्म ही होगा, तो वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग की बात आ रही है. तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे अगर डेडलॉक आता है तो वहां पे बहुत ही डेंजरस है डेडलॉक. ओके, सो हाउ कैन वी अवॉइड द डेडलॉक? थ्रू दिस टू टाइप ऑफ method. First is deadlock prevention and second is detection and recovery. First is deadlock prevention. Deadlock prevention says that, okay, which ensures that system will never enter a deadlock state. Okay, it is saying that कभी system हमारा deadlock के situation में आएगा ही नहीं. मतलब हम पहले ही प्रिवेंशन टेक्निक यूज कर लेंगे कि हम डेडलॉक में आने नहीं देंगे, सारे कंडीशंस से कर लेंगे कि अगर ये कंडीशंस बनती है तो हम इसके लिए सिस्टम कैसे तैयार करते हैं. ओके, मींस एग्जांपल लेते हैं कि जो स्टूडेंट है वो तैयारी करता है कि उसका जो एग्जाम हो पहले से तैयार करके जाता है कि एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चंस की जगह दूसरा क्वेश्चंस पूछ सकता है, या कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगी हो सकता मे भी अराइज हो सके. जो आने वाले हैं वो तो तैयार कर ही रहा है, जो नहीं भी आ रहे हैं वो भी वो साथ में तैयार कर रहा है. ओके, तो पहले से प्रिवेंट करे, प्रिवेंशन टेक्निक लेके जा रहा है कि अगर समहाउ ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं ये क्वेश्चंस मैं तैयार करके जा रहा हूं उसकी जगह पे. तो वो प्रिवेंशन टेक्निक पहले से ही बना के जा रहा है. सो सेम यहाँ पे प्रिवेंशन टेक्निक ये कहती है, डेडलॉक प्रिवेंशन इंश्योर करती है दैट सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट. हम ऐसे सिस्टम ही डिजाइन करेंगे कि डेडलॉक सिचुएशन में कभी जाएगा ही नहीं. पहले प्रिवेंशन टेक्निक हमने बना ली. दूसरा हमारा क्या है, डिटेक्शन एंड रिकवरी. हमारा क्या कहता है, डिटेक्शन एंड रिकवरी. डिटेक्शन एंड रिकवरी इज सेइंग दैट इट अलाउ सिस्टम टू एंटर इनटू द डेडलॉक. ओके, अलाउ करे सिस्टम को डेडलॉक में आने के लिए कि जब डेडलॉक आएगा तो हम लोग उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे. मीन्स जो स्टूडेंट है वो तैयार करके बैठा हुआ कि ठीक है जब मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं तैयारी करूंगा आगे की कि कौन से क्वेश्चंस को लेके मैं फेल हुआ था और क्या प्रॉब्लम थी. मतलब पहले डेडलॉक आने दो फिर हम रिकवरी सिस्टम करेंगे. ओके ओके, so these are the two prevention techniques. Okay, and in another video we will see that this deadlock handling system, first is deadlock prevention and detection and recovery in depth. Okay, through the example. Okay, so that's all for the today lecture. I hope you will understand what is deadlock and what is view serializability. Thank you.